So hello students. So good morning everyone. I welcome you all for the next chapter of Science and Technology Part 2. So today we are going to see the next chapter for our syllabus. The name of the chapter is Energy Flow in an Ecosystem. So how energy flow in an ecosystem discussed in the chapter. So before enter into the chapter, what are the concept we cover from the chapter. तो आज के सेशन में हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। उस चैप्टर का नाम रहेगा एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कौन से कंसेप्ट के ऊपर इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे। सो व्हाट आर द कंसेप्ट वी विल कवर फ्रॉम दिस चैप्टर। सो फर्स्ट वन इज फूड चेन एंड फूड वेब। तो फर्स्ट जो अपना कंसेप्ट रहेगा food chain and food web. This one is the first concept of our chapter. Next, now the energy pyramid. The energy pyramid. Last one concept is biogeochemical cycles. Biogeochemical cycles. Biogeochemical cycle. So there are three kinds of cycles. One is first one is a carbon cycle. Second one is a oxygen cycle. And last one is a nitrogen cycle. So there are three biogeochemical cycles for our syllabus. So these concepts we covered from the chapter. तो इस चैप्टर से हमें इन कंसेप्ट के बारे में क्या कर लेना बोलो तो डिस्कशन कर लेना है। फर्स्ट वन इज फूड चेन एंड फूड वेब। नेक्स्ट वन द एनर्जी पिरामिड, biogeochemical cycle. There are totally three cycles of our syllabus. One is a carbon cycle, oxygen cycle and the nitrogen cycle. So from this chapter we learn इस चैप्टर से हमें क्या सीखना है, हाउ एनर्जी फ्लो इन अ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में एनर्जी किस तरह से फ्लो होती है इसके बारे में इस चैप्टर में हमें क्या है डिस्कशन कर लेना है। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर चैप्टर, सो कैन यू रिकॉल समथिंग फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। चैप्टर में जाने से पहले हमें कुछ चीजों को क्या है रिकॉल करना बहुत जरूरी है। So from your textbook, looking back, there are three questions. तो हमें क्या टोटली looking back में तीन क्वेश्चन पूछा है। First one, what is mean by ecosystem? Second one, which are the different types of ecosystem? How the interaction takes place between biotic and the abiotic factors of an ecosystem? So how do interaction take place between the biotic and the abiotic components of an ecosystem? So let's start today's session. So people starting today's session to discuss about the something recall. हमें कुछ तो कुछ क्या करना है रिकॉल करना है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछे सो है व्हाट इज मीन बाय इकोसिस्टम। नाउ सी फर्स्ट वन क्वेश्चन इज कैन यू रिकॉल में व्हाट इज मीन बाय इकोसिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है व्हाट इज मीन बाय इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मीनिंग का क्या वर्ड होता है इसके बारे में हमें जान लेना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम एंड डिफाइन अ इकोसिस्टम। नाउ सी द वर्ड इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। जो हमारा वर्ड है इकोसिस्टम, इसको दो पार्ट में क्या है बोलो तो डिवाइड किए से। फर्स्ट पार्ट इज इको एंड सेकंड पार्ट इज सिस्टम। सो इकोसिस्टम वर्ड इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। अंडरस्टैंड? इकोसिस्टम जो वर्ड है उसको क्या है दो पार्ट्स में डिवाइड किए हुए। वन इज इको एंड नेक्स्ट वन इज अ सिस्टम।
Now see, what is the meaning of eco? It is related to the environment. It is related to the environment. Understand? It is eco means environment. Next now system, interacting groups. System का meaning क्या होता है बोलो तो interacting groups. Interacting groups. No, sir. So what is the meaning of a ecosystem? The word ecosystem is divided into the two parts. One is ecosystem, eco, and next one is system. So eco is related to the environment, and system is a interacting groups. System क्या रहता है अपने एक interacting groups रहता है. Understand? Now see what is the meaning of a ecosystem. The interaction between biotic and the abiotic factors of a environment is called as a ecosystem. The interaction between the biotic and the abiotic factors of an environment is called as a ecosystem. जो बायोटिक फैक्टर्स का और अबायोटिक फैक्टर्स का जो इंटरेक्शन रहता है उसको हमें क्या कहना बोलो तो इकोसिस्टम कहना है. So on the definition, the interaction between biotic and the abiotic factors. Now see, the interaction between biotic and abiotic factors of an environment is called as ecosystem. Is called as ecosystem. Understand everybody? The interaction between biotic and the abiotic components and abiotic factors are called as a ecosystem. Understand everybody? Now see, what is the meaning of biotic factors and the abiotic factors? Now see, what are the example of biotic components and the abiotic components of an environment? तो biotic factors के जो examples रहेंगे ध्यान में रखिए. Abiotic factors के जो आपके examples रहेंगे, first one is plants, animals, human beings. Plants, animals, and human beings are the biotic factors of environment. Plants, animals, human beings are the biotic components or biotic factors of our environment. And abiotic factors. Now see, abiotic factors are soil. Understand? हमारा जो soil है, temperature है, humidity है. These are the examples of abiotic factors. इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं. What is meant by biotic factors and the abiotic factors? Now see, understand what is the meaning of ecosystem. The interaction between biotic and the abiotic factors of an environment is called as a ecosystem. Understand? Now see the next one question. Which are the different types of ecosystem? Which are the different types of ecosystem? Which are the different types of ecosystem? Different types of ecosystem. So understand everybody what is the meaning of a ecosystem. Ecosystem means interaction between biotic and the abiotic factors of environment. Now see, which are the different types of ecosystem? Now see, there are two types of ecosystem. One is aquatic ecosystem and next one is a terrestrial ecosystem. There are two kinds of ecosystem. One is aquatic ecosystem and next one is a terrestrial ecosystem. There are two types of ecosystem. There are two types of ecosystem. One is aquatic ecosystem
aquatic ecosystem and terrestrial ecosystem and terrestrial ecosystem. There are two kinds of ecosystem. One is a aquatic ecosystem and next one is a terrestrial ecosystem. Understand what is the meaning of ecosystem and the types of a ecosystem. Now next one question, how do interaction takes place between biotic and the abiotic factors? Now see. The next one question is how do interaction, number third, how do interactions takes place, how do interaction takes place between biotic and abiotic factors of an ecosystem. So how do interaction takes place between biotic and the abiotic factors of an ecosystem? So what is the relation between biotic and the abiotic components of an ecosystem? So बायोटिक फैक्टर से और अबायोटिक फैक्टर जो हमारे इन्वायरमेंट में है उनका क्या रिलेशन रहेगा, इसके बारे में हमें डिस्कशन कर लेना है. नाउ सी, living organisms continuously interact with biotic factors. Now see, so living organism continuously interacting with abiotic factors like our soil, temperature, and the atmospheric conditions. They affect the quality of abiotic factors surrounding them. Now see, so living organism affect the quality of abiotic factors of surrounding them. This indirectly affects the quality of the biotic factors sharing the same as ecosystem. In any ecosystem, every living organism play specific role with respect to the other factors. Now see, in any ecosystem, every living organism play specific role with respect to the other factors. हर एक इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग रोल है उसके रेमिनी फैक्टर के साथ. अंडरस्टैंड? सो इन एनी इकोसिस्टम every living organism perform a specific role with other factors. So other factor के साथ क्या है, वो अपना क्या है specific role क्या है perform करता है. Every living organism requires specific abiotic factors for its survival life. Now see, so every living organism on the earth require specific abiotic factors like water, oxygen, soil are the abiotic factors. It's very important for our life. हमारी लाइफ को अगर कंटिन्यू चलाना है, यू मस्ट बी रिक्वायर अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन एनवायरनमेंट लाइक वाटर, एयर, प्लांट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द अबायोटिक फैक्टर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो दीज आर द रिलेशन बिटवीन द बायोटिक एंड द अबायोटिक फैक्टर्स. नाउ राइट डाउन. एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म every living organism require specific abiotic factors for its survival. So every living organism require a specific and the different kinds of the factor for their continuation of a life. हमें जिंदा रहने के लिए अलग अलग प्रकार के जो एक्वेटिक फैक्टर्स उनकी हमें क्या है जरूरत पड़ती है. Now see the type of soil. Now see the type of soil, quality of light,
quality of light, temperature, humidity, temperature, humidity, temperature, humidity, etc. are some of the abiotic factors, are some of the abiotic factors, some of the abiotic factors, some of the abiotic factors that affect the biotic factors. Biotic factors. Now see, so there are different types of abiotic factors like soil, quality of light, temperature, humidity. Some of the abiotic factors are effect on the biotic factors. हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ जो अबायोटिक फैक्टर्स है उनका क्या बोलो तो बायोटिक फैक्टर्स के ऊपर क्या है इफेक्ट हो जाता है. अंडरस्टैंड. नाउ सी, इन एनी इकोसिस्टम, in any ecosystem, every living organism plays a specific role with respect to other factors. Now see, each and every living organism in any ecosystem plays a specific role with other factors. तो हर एक अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके जो अलग अलग इकोसिस्टम है वो रिमेनिंग जो अपने फैक्टर से इन्वायरमेंट के उसके साथ क्या हो तो स्पेसिफिक रोल्स को क्या है परफॉर्म करते हैं. अंडरस्टैंड. सो दिस आर द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड द अबायोटिक कंपाउंड्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट. अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सिलेबस. अब हम अपने क्या है चैप्टर तक जाते हैं. नाउ स्टार्ट आवर लेसन, आवर चैप्टर. सो क्या रिकॉल में हमें 3 क्वेश्चन पूछा था, इसके बारे में डिस्कशन किया है. नाउ स्टार्ट आवर चैप्टर. अब हम अपना क्या है चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन जो अपना कंसेप्ट था एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम. एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम. एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम. So energy flow in an ecosystem. Flow in an ecosystem. Now see, we have already learned the classification of a living organism according to the mode of nutrition into producer, consumers, saprophytes, and decomposers. Now see, so already in the last chapter already we discussed how living organisms are classified, on which criteria are used for the classification of plants and the animals. So now in this session we discuss about the organism according to the mode of nutrition into producers, consumers, saprophytes, and decomposers. Consider various trophic levels of the ecosystem around us. So there are the different kinds of the various trophic levels of the ecosystem around us. So let's discuss. तो हमारे अराउंड में क्या हो तो डिफरेंट काइंड्स के क्या है ट्रॉपिकल लेवल्स है ऑफ द इकोसिस्टम. वो डिस्कस वन बाय वन. उसको हम क्या है एक एक क्या उसको इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं. और फर्स्ट वन प्राइमरी कंज्यूमर्स. फर्स्ट वन इज वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम. फर्स्ट पॉइंट, देयर आर डिफरेंट various trophic levels of the ecosystem. Now see the different kinds of the trophic levels of an ecosystem. Now see one by one. First one is the primary consumers. Primary consumers yeah, herbivores. Primary consumers are herbivores. They are directly depend upon
autotrophs. Now see, primary consumers are directly depend upon the autotrophs, yeah, producers. So they are directly dependent on autotrophs, yeah, producers. So we know that all green plants are the autotrophs. So herbivores are directly depend upon the autotrophs. तो जो herbivores जो animals रहेंगे वो directly किसके ऊपर depend रहेंगे तो is depending upon the autotrophs. So write the examples of herbivores. Examples write down: grasshopper, elephant, squirrel, elephant, a cow, ox, etc. There are different kinds of the examples of primary consumers. So primary consumers are herbivores are directly depend upon the autotrophs. वो क्या होता है directly क्या है plants के ऊपर क्या है depend रहती है. Now next से secondary consumers. Secondary consumers are carnivores. Now see, these consumers use herbivores as their food. Now see, so carnivores are depending upon the herbivores. So these consumers use the herbivores as their food. These consumers use herbivores as their food. So carnivorous animals are depending upon the herbivores. Now the examples: frog, owl, fox, etc. Now the example is frog, owl, fox, etc. So these animals are directly depending upon the herbivores. Now next one, see, apex or top consumers. नेक्स्ट वन एपेक्स ऑफ टॉप कंज्यूमर्स कार्निवर जो अपने टॉप कंज्यूमर्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है. नेक्स्ट वन इज टॉप कंज्यूमर्स. नेक्स्ट नाउ सी नंबर थर्ड टॉप कंज्यूमर्स. टॉप कंज्यूमर्स क्या और अपेक्स, इसको क्या है बोलो तो अपेक्स भी कहा जाता है. Apex consumers. Now see. So these consumers use herbivores and the carnivores as their food. Now see. So these consumers are mainly depending upon the herbivores and the carnivores. No other animals feed on top consumers. So no other animals are feed on the top consumers. Top consumers के ऊपर बोलो तो कोई भी क्या है डिपेंड नहीं रहता है as a food. Now see. So these consumers use herbivores and carnivores as their food. So no other animals feed on top consumers. टॉप कंज्यूमर्स के ऊपर कोई सभी एनिमल्स क्या बोले तो डिपेंड नहीं रहता है. फ्रॉम द एग्जांपल इज टाइगर, लायन, etc. Tiger, lion, etc. are the examples of top consumers. So these consumers use herbivores and the carnivores as their food. जो टॉप कंज्यूमर्स में आने वाले जितने भी एनिमल्स उनका फूड क्या रहता है वो तो herbivores animals and the carnivorous animals. So no other animals feed on the top consumer. तो टॉप कंज्यूमर के ऊपर कोई भी एनिमल्स क्या हो तो डिपेंड नहीं रहती. लास्ट वन इज ओमनीवरस, मिक्स्ड कंज्यूमर जिसको कहा जाता है.
last one is omnivorous. Last one is omnivorous. Now see, humans bear etc on herbivores and the consumers. Now see, human है, bear है, etc. So these animals are mainly depending upon the herbivores and the carnivores. जो अपना bear है, human beings है, वो किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे? इज मेनली डिपेंडिंग अपॉन द herbivores and the carnivores. Now see, example, humans bear etc feed on herbivores and carnivores. Now see, so these consumers feed on herbivores and carnivores. So these consumers are depending upon the herbivores and the carnivores. तो राइट देखो एग्जांपल, उनका जो एग्जांपल रहेगा, एग्जांपल राइट डाउन ह्यूमन बीइंग्स, humans bear etc. So these are the omnivorous. इसको क्या है, मिक्सर कंज्यूमर भी कहा जाता है. So all of you understand. So in a various trophic level of the ecosystem, one is a primary consumer, secondary consumer, top consumers, and the omnivorous consumers are the different levels of an ecosystem. Understand? Now so the next one concept is a components of an ecosystem. Next now see, so what are the components of a ecosystem? इकोसिस्टम के कौन से कंपोनेंट्स है, इसके बारे में हमें डिस्कशन कर लेना है. सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम? Components of ecosystem. Next one, components of ecosystem. Now see, so what are the components of a ecosystem? So there are two main components of an ecosystem. There are two components of a ecosystem. One is biotic components and next one is abiotic components. So there are two types of ecosystem. Sorry, there are two components of there are two components of ecosystem. So one is first biotic components. Now number two is abiotic components. Now see, there are two components of an ecosystem. One is a biotic components and next one is a abiotic components. So plants, animals and the human beings are the biotic components. So biotic components कौन से रहेंगे? Plants, animals and human beings, and humans are the abiotic components of an environment. तो हमारे environment में plants, animals and the humans are the biotic components of an ecosystem. Now see, abiotic components. So abiotic components हमें ध्यान में रख लेना है, बहुत जरूरी है. एयर, वाटर, सॉइल, एयर, वाटर, सॉइल, sun, etc. are the abiotic components of an ecosystem. Understand? Now see, abiotic components of an environment is the air, water, soil, sun, etc. So these are the examples of abiotic components. So understand everybody? There are two types of components of an ecosystem. One is biotic and next one is abiotic components. So today stop here. We will continue on the next session. तो आज यहाँ पर आप stop कर लेते हैं. So in this session, already we discussed what is the meaning of ecosystem,
And next one, what are the types of ecosystem and what is the relationship of abiotic and the abiotic components, and the various trophic level of an ecosystem. So today's topic will be continue on next session.